Welcome to session 2. In this session, we are going to cover topic what is Salesforce, what is org and database. In session 1, we covered what is cloud computing, types of cloud computing, and most important thing is what is CRM, customer relationship management. काम की चीज तो ये थी, आज Salesforce is world's number one CRM. 22% market share Salesforce के पास है, right? So whenever we take this word Salesforce, right? तो इमीडिएटली ये वर्ड तो आता है नंबर वन सीआरएम एंड सीआरएम विल ऑटोमेट टू थिंग्स सेल्स एंड सर्विस ऑफ एनी बिजनेस एंड नो बिजनेस कैन रन विदाउट सेल्स एंड सर्विस ये तो मैंडेटरी तो सीआरएम इज रिक्वायर्ड वन मोर थिंग इज दिस इज लो कोड प्लेटफॉर्म मींस फॉर अचीविंग द रिक्वायरमेंट्स आई वुड से ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट देयर इज नो नीड टू राइट अ कोड बहुत सारी चीजें सेल्सफोर्स में ओओटीबी यानी आउट ऑफ द बॉक्स यानी विदाउट राइटिंग अ कोड हो जाती है. So for example, if you want to build a screen जहाँ पे यूजर के इनपुट्स लेने हैं, जरूरी नहीं हमको यहाँ पे कोडिंग करनी है. ये तो बिना कोड लिख के भी सेल्सफोर्स में हो जाएगा. यानी इसको बोलते हैं सेल्सफोर्स का एडमिन पार्ट, राइट? तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स आई वुड से एक्चुअली सेल्सफोर्स का एम ही है मिनिमम कोडिंग. जहाँ पे विदाउट कोड कॉन्फ़िगरेशन से चीजें हो सकती है, हम वहां पे कभी कोड लिखते ही नहीं है. Our platform is AI enabled since 2016. Einstein नाम है AI का. अभी तो एजेंट फोर्स भी आ चुका है. So आप सब लोग में भी AI सुनते हो कि लास्ट 2 और 3 इयर्स. 2 तो ज्यादा बोल दिया, 1 और 2 ईयर में भी, राइट? Our platform 2016 से AI enabled है. Data cloud is there, security is there, AppExchange is there. बहुत सारी चीजें इनबिल्ट यहाँ पे Salesforce में अवेलेबल है. सर छोटा सा एग्जांपल, सपोज एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें एक लोन ऑफिसर है और एक मैनेजर है. तो इन दोनों को दिखने वाले डेटा में डिफरेंस चाहिए. मे बी सारा डेटा दिखना नहीं चाहिए. कुछ कस्टमर की डिटेल्स है जिसकी उनकी इनकम की डिटेल दिखती होगी, वो स्पेसिफिक यूजर को नहीं दिखाना है. तो ऐसी चीजें इजीली विदाउट राइटिंग अ कोड भी सेल्सफोर्स में अचीव हो जाएगी. ऐप एक्सचेंज इज जस्ट लाइक आई वुड से प्ले स्टोर, ऐप स्टोर. मोबाइल में अपन डायरेक्ट कोई चीज इंस्टॉल कर सकते हैं, वैसे सेल्सफोर्स में भी हम डायरेक्ट ऐप एक्सचेंज से भी चीजें प्रोडक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं. स्लाइड है टू शो यू कितना बड़ा, कितना रिच प्लेटफॉर्म है ये. 1.5 लाख कंपनी सेल्सफोर्स यूज करते हैं. मोर देन 20 क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है, राइट? सो फॉर एग्जांपल बैंक के लिए फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड है, हॉस्पिटल है उसके लिए हेल्थ क्लाउड है, कोई मे बी केबल कंपनी है, राइट, जो इंस्टॉलेशन करती है, उनको लिए फील्ड सर्विस लाइटनिंग है. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी, राइट, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, यहाँ प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल है. आपकी काम की चीज यहाँ पे लिखिए 5 ईयर एक्सपीरियंस सेल्सफोर्स डेवलपर कैन गेट 30 लाख. एस्ट्रिक इज देयर, गुड स्किल्स. स्किल से नहीं है तो नो वन विल एबल टू हेल्प. 25 इयर्स की लिगेसी है. मे बी आपने 1-2 साल में नाम सुना होगा. 25, आई एम वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म सिंस 12-13 इयर्स. दिस इज नॉट समथिंग बहुत लोग वर्ड यूज करते सेल्सफोर्स बहुत बूमिंग है. नाउ वर्ड सेल्सफोर्स बहुत बूमिंग है. पहले से है, तभी तो मैंने आज से 12 ईयर पहले डिसीजन लिया था to move into Salesforce. So there are multiple options in Salesforce. You can see 9.3 million jobs by 2026. Big number, 93 lakh, right? Big number. But across world, right? There are multiple job offerings in Salesforce. Salesforce administrator, Salesforce developer. Once you are an experienced Salesforce developer, you will become Salesforce consultant. Once you are an experienced Salesforce consultant, you will become Salesforce technical architect. Once you are experienced Salesforce technical architect, you will become solution architect. डायरेक्ट नहीं जंप कर सकते यहाँ पे. पहले आपको जर्नी यहाँ से स्टार्ट करनी. मोस्ट ऑफ द ओपनिंग जो मार्केट में सेल्सफोर्स डेवलपर के लिए, एक डेवलपर को एडमिन भी आता है. सो आवर फोकस शुड बी ऑन सेल्सफोर्स डेवलपमेंट ओनली. दिस इज फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरप्राइज कंपनी. जो सेल्सफोर्स में एप्लीकेशंस बनते हैं वो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनते हैं. इट्स नॉट लाइक गेमिंग वेमिंग ऐसे एप्लीकेशन नहीं बनते, यूटिलिटी नहीं. एक एंटरप्राइज को ऑटोमेट करने के लिए जो एप्लीकेशंस बनाने हैं वो बनेंगे विद द हेल्प ऑफ सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म. और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन. इसको समझाता हूं मैं मे बी विथ ग्राफिक्स. सो सपोज कंसिडर दिस एज अ सेल्सफोर्स क्लाउड. ये सेल्सफोर्स का सपोज बड़ा एक तो क्लाउड इज अ वर्चुअल टर्मिनोलॉजी. एक्चुअल में ऐसा कोई क्लाउड एग्जिस्ट नहीं करता है. बहुत सारे सिस्टम को कनेक्ट किया, दैट इज अ क्लाउड, बिकॉज वो स्पेस बहुत लोगों के लिए एक्सेसिबल है.
सो आउट ऑफ दिस बिग क्लाउड वी आर गोइंग टू आस्क सेल्सफोर्स कि एक छोटा सा इंस्टेंस हमको बना के दो। इन्होंने क्या किया, हमको छोटा सा मुझे ये इंस्टेंस बना के दिया। मे बी एक दूसरी कंपनी है, कोई बैंकिंग की कंपनी है, वो ये यूज कर रहा होगा, मे बी गूगल यूज कर रहा है, राइट? तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पेस रहेगा। तो जैसे मैंने सेल्सफोर्स को बोला मेरे लिए स्पेस अलॉकेट करके दे, राइट? तो उन्होंने मेरे लिए एक स्पेशल इंस्टेंस अलॉकेट करके दिया, राइट? सो ये जो इंस्टेंस है, दिस इंस्टेंस विल बी अवेलेबल एक्सक्लूसिवली फॉर मी। तो मुझे इस इंस्टेंस को हम बोलेंगे ऑर्ग। ऑर्ग मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का मुझे एक्सेस चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन का मुझे एक्सेस चाहिए। तो एक्सेस कैसे मिलेगा? तो हमको इसके लिए साइन अप करना पड़ेगा। इनिशियली इसको साइन अप करना पड़ेगा एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स हम इसको यूज करेंगे। इन ऑर्डर टू ग्रो सेल्सफोर्स कम्युनिटी, सेल्सफोर्स ये और सीखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए देती है। मे बी यू कैन गो टू developer.salesforce.com। यहाँ पे ऑप्शन है गेट डेवलपर एडिशन। क्लिक ऑन दिस गेट डेवलपर एडिशन। आई विल एंटर माई फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, suppose I will title as Dave. My email ID is sumit.m, and then I will use recently created one new email ID. Use that for ci@gmail.com. My company name is Cloud Intellect. You can use your company name, or maybe if not working anywhere, you can put any name, and region as India. Agree, and then I am not a robot, and sign me up. मेक श्योर दैट कि आपकी ईमेल आईडी वैलिड हो, उसका एक्सेस आपके पास हो, एंड देन साइन मी अप। वंस यू परफॉर्म दिस यू विल गेट एन ईमेल। या सो हियर वी हैव दैट ईमेल। यू नीड टू reset your password. In order to reset your password, you will click on reset password, then click on reset password. We'll keep some password, should be 8 characters, at least one number and one letter. So I'm following same thing. And then security question also you can keep. And then change password. And yes, welcome to Salesforce. So this is the org which I was referring to. Out of this a big cloud, a small instance access Salesforce has given to us. This small instance is called as org. Org means organization. Org means organization. So thank you so much for attending this session. In the next session, we are going to go more deep dive into concepts of Salesforce. As I said, part 3 will be about the data modeling, how we create, we have a concept of object fields. So we are going to create object and fields in Salesforce. So thank you so much. Do subscribe to our channel, and don't forget to join next session. Thank you. Bye-bye.